विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ? तो जो ग्रोथ होती है, व्हाट इज दैट? ग्रोथ मीन्स आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, पर कैपिटा, करेक्ट. इनकम विल इंक्रीज, करेक्ट. देयर विल बी सम चेंजेस इन द इकोनॉमी, करेक्ट. क्योंकि पहले क्या होगा कि आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज्यादा होगे, एंड आफ्टर ग्रोथ मे बी यू विल बी मोर इनटू द इंडस्ट्रियल सेक्टर. सो देयर विल बी सम चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ योर इकोनॉमी. एकदम ठीक बात है. So option A, B, C, all of them are correct. So the correct answer is D. बेटा next question पे आओ. Economic development is characterized by. तो economic development में what happens? There is structural change in the economy. Correct. Growth हो रही है तो development तो हो ही रही है ना. Growth, of course, they are different things, but development may be structural change in economy will take place, and there will be change in occupational structure. ये भी ठीक है बेटा. Earlier you will be into agricultural sector, बाद में ज़्यादा people will be in the industrial sector, then more people will be in the service sector. तो occupational structure will change, correct. So both A and B are correct option. A और B दोनों ही correct है. Better come to the next question. Underdevelopment is defined in terms of. So when there is underdevelopment, सबसे basic चीज जो होती है वो होती है that the income will be very low in the economy. The per capita income will be very, very low. So the correct answer to this question is B. There will be low income. हाँ, income कम होगी तो unemployment will be more, poverty will be very low, will be very high. ये सब होगा, correct. But majorly, whenever you will see the definition of underdevelopment, you will see it in terms of per capita income. हमेशा इसकी जो definition होती है वो per capita income के basis पे होती है. So that is in fact the correct option. ठीक है बच्चे? Okay बेटा, come to the next question. Which of the following explains the term economic development? Improvement in technology involved? Yes. जब आप एक underdeveloped से developed nation की तरफ जाओगे, you will use better technology. That is correct. Improvement in production, हाँ, production will increase. Improvement in distribution system, yes. जो पहले inequality exist करती थी economy में, that will lower. More people will have higher income, right? So there will be improvement in the distribution system. That is correct option. So all the three are correct. So the correct answer to this question should be beta all of the above. तीनों के तीनों ही correct हैं. It will be all of the above. ठीक है बच्चे? Come to the next one beta. Which of the following is generally regarded as the true index of economic growth? ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है बेटा? व्हाट वी सी इज पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम. एंड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, देन देयर विल बी ग्रोथ. देन देयर विल बी ग्रोथ. बच्चा, विच पर कैपिटा इनकम? रियल. नॉमिनल को बढ़ा के क्या करना अगर इन्फ्लेशन भी उतने से आ गई? We are concerned with real per capita income. So the correct answer to this question will be that it is A. An increase in national income at constant price. Constant price means that it is not A. This is not real income. It is B. Sustained increase in real per capita income. This is the correct answer to this question. So increase in real per capita income. हमेशा याद रखना, if they ask you in exam whether growth is related to real per capita or real national income, national मतलब GDP बचे, या NNPFC, this is not per capita. ग्रोथ की बात हमेशा पर कैपिटा टर्म्स में होती है. So growth is per capita income, right? So you will always mark the answer as per capita. वो आपका correct answer होगा. Okay बच्चे, come to the next question. The concept of economic growth is, अब देखो ध्यान से समझना. हाँ देखो, growth is narrow, development is broad. और
इसको याद रखने के लिए एन एग्जाम्पल कैन बी कि एक ह्यूमन बीइंग की हाइट ग्रो करती है, पर ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट होती है, जिसमें वो बेटर ह्यूमन बीइंग बनता है, जिसमें वो अच्छी चीजें सीखता है। सो ग्रोथ इज लिमिटेड। ग्रोथ हो सकती है आपकी सिर्फ हाइट की, आपकी सिर्फ इनकम की, एक चीज की, इट्स लिमिटेड। डेवलपमेंट हैज अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। तो डेवलपमेंट ब्रॉड होती है, ग्रोथ नैरो टर्म होता है। सो वी कैन गो हेड एंड से दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरोअर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, ग्रोथ इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Narrower, which of the following is not an indicator of economically underdeveloped country? Let's see. Not an indicator पूछ रहे, not. Low per capita income, हाँ underdeveloped है तो per capita income तो less ही होगी. This is an indicator. Low proportion of labor force in the primary sector, no 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 no. अगर primary sector में less लोग employed हैं, there are less people employed in the primary sector, तो इसका मतलब तो हो गया कि यू आर ग्रोइंग, यू आर डेवलपिंग। इफ पीपल मूव आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर इनटू द सेकेंडरी सेक्टर, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी डेवलपमेंट हो रही है, तो आप इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड नहीं हो, राइट? बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी। तो यही तो हमें चाहिए, यही तो रोस्टोज मॉडल है, राइट? So actually low proportion of people in primary sector, this represents developed nation, not underdeveloped nation. So this is the correct answer to this question. Come to the next question. The rate of growth of an economy majorly depends on. तो बेटा growth किस पर डिपेंड करेगी? किस रेट से लेबर फोर्स ग्रो कर रहा है? दिस इज करेक्ट. When labor force will grow, मतलब more people who can work will grow. When people who can work will grow, then your output will grow. When your output will grow, your GDP will grow. तो अगर लेबर फोर्स बढ़ेगा, ज्यादा लोग मेरे काम करने वाले होंगे, देन आई विल ग्रो एज एन इकोनॉमी, मेरी ग्रोथ होगी इकोनॉमी में. सो दिस इज करेक्ट. लुक इनटू द नेक्स्ट. द प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम सेव्ड एंड इन्वेस्टेड. बट व्हेन सेविंग्स विल इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज. जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा. दिस इज करेक्ट. द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, करेक्ट. जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, इट विल increase the GDP of the economy. So all three options are correct. So the correct answer to this question is all of the above. सारे ही correct options है. Come to the next question. Assume the following determinants of growth which is non-economic factor. देखो बेटा, natural resources economic factor है. आप natural resources को economically use कर सकते हो. जैसे for example, you can go ahead and use them for the purpose of tourism. This is an economic factor for the determining the growth. अब next देखो, population growth. This is also an economic factor. Capital accumulation, ये भी एक economic factor है. When capital will increase, then investment will increase, then GDP of the economy will increase. But favorable legislation, this is not an economic factor. अगर मैं बोल दूं कि लेजिस्लेशन फेवरेबल है, तो उससे हाउ इज दैट रिलेटेड टू एन इकोनॉमिक फैक्टर? हाउ इज दैट एन इकोनॉमिक फैक्टर? ये तो इकोनॉमिक नहीं है. सो आंसर विल बी सी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिसाइड्स इंक्रीज इन आउटपुट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद. बेटा डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. ग्रोथ इंटरेस्टेड रहता है इनकम रिलेटेड, पर डेवलपमेंट क्या बोलता है? इनकम तो बढ़ाओ, बट विमेन को इक्वालिटी दो, जेंडर इक्वालिटी लेकर आओ. हाँ, बेटर वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी दो. बेटर डिस्क्रिमिनेशन रिमूव करो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन. हाँ, सिक्योरिटी लेकर आओ. हाँ, तो डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. एजुकेशन इंप्रूव करो, हेल्थ इंप्रूव करो, इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट.
So development, besides increase in output, it is associated with technology, with how income is distributed, with life sustenance, self esteem, freedom. ये सब कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड है. डेवलपमेंट में आपको सब कुछ चाहिए. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी. बेटा डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो एक बहुत अच्छा ये रहेगा दैट यू गो अहेड एंड यू रीड द बुक्स रिटन बाय अमर्त्य सेन. वो इस बारे में बात करते हैं कि क्यों ग्रोथ काफी नहीं है और क्यों डेवलपमेंट की जरूरत है. व्हाई डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है बेटा, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय. तो ग्रोथ तो इनकम कॉन्सेप्ट है और इनकम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? जीडीपी से. सो इट इज जीडीपी, राइट. इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी सीन एज एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ. तो अगर देखो ध्यान से समझो, सी इफ देर विल बी ग्रोथ देन योर आउटपुट विल इंक्रीज. अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है मतलब आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगा. आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे इकोनॉमी में, राइट. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. Development economics is the study of poverty reduction, transformation of institute, allocation of resources in the developing country. all beta all मैंने अभी समझाया that development is a broad concept. और डेवलपमेंट जो है वो बोलता है कि पॉवर्टी को कम करो, इनइक्वालिटी को कम करो, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाओ, वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज दो. सो इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट. इट इज रिलेटेड विद ऑल ऑफ दिस, राइट. So we can say that the correct answer to this question will be D. Better come to the next question. A good definition of meaning of development is, again, same type of question only. Elimination of poverty, yes. Improving quality of life, yes. Fulfillment of the potential of individual, yes. So all of the above is the answer. Better come to the next question. Development economics must have a scope wider than traditional economics because अब जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स था वो बोलता था कि जस्ट फोकस ऑन जीडीपी. इफ यू आर फोकसिंग ऑन जीडीपी इट इज फाइन. डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने आके बोला कि ना 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 ना, ओनली फोकसिंग ऑन जीडीपी इज नॉट इनफ. You must go ahead and you must focus more on transforming the institutes. You must go ahead and you must focus on reducing inequality, on poverty elevation. तो ये सब बातें किसने की? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने. तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने बोला कि आप इंस्टीट्यूट्स को ट्रांसफॉर्म करो, लीगल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करो, क्रिमिनल्स पता करो कौन है, क्रिमिनल्स का रेट कम करो. सो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स basically talks about transformation of social institutes. So the answer is C. Come to the next question beta. The concept of economic planning in India is derived from. तो आपको याद होगा यूएसएसआर की काफी बात हुई है, स्पेशली अगर आप सेकेंड 5-year प्लान, फर्स्ट 5-year प्लान को पढ़ो तो you will read a lot about USSR. So the answer is Russia. ठीक है, come to the next question बेटा. Economic development refers to. तो क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम है? आर दे द सेम थिंग? नो. इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंजेस इन आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर, यस. ये है ग्रोथ बच्चे. दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ. इसी के अंदर अगर मैं इनइक्वालिटी को रिमूव कर दूं, पॉवर्टी को कम कर दूं और बहुत चीजें कर दूं, आउटपुट को बेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दूं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंप्रूव कर दूं, तो इन सबको मिलाकर आ जाएगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट विल बी अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. सो वी कैन गो ahead and say that B is the correct answer to this question. ठीक है बेटा, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस स्ट्रक्चरल चेंजेस प्लस क्वालिटेटिव चेंजेस. तो B is the correct answer. आ गया बेटा. इन रिकार्डियन स्कीम ऑफ थिंग्स सेविंग्स आर प्रोवाइडेड बाय. तो रिकार्डो ने क्या कहा था? रिकार्डो ने कहा था
कि देखो लेबर क्लास नहीं सेव करने वाली, वो तो मिनिमल वेज वाले हैं, उनके पास तो खुद के पास वेज नहीं है, दे डोंट हैव वेजेस. So he said that labor class will not save. Labor class does not have wage. It is going to be the capitalist who will save in the economy. So the correct answer to this question will be capitalist. Come to the next question, bache. Which one of the following statement is not in tune with Ricardian theory of growth? So Ricardian theory of growth basically goes ahead and says that profits will tend to fall over time. ये नहीं बोलता profit tend to rise. It says profit tend to fall over time, right? So the answer to this question will be D. This is not in tune. Profit tend to rise is incorrect. Profit will fall over time. That is correct option. ठीक है. Come to the next question. Which of the following is not an assumption of Ricardian theory? तो Ricardian theory ने बेटा क्या बोला था? Minimal wages. So if you're talking about minimal wages, you can't be talking about increasing wage. ये assumption नहीं हो सकती है, right? So rising real wage is not an assumption of the Ricardian theory. This is incorrect. ये गलत option है. Ricardo built his theory around, so his theory was around wages of the labor class. So answer is C. In Ricardian system, a crucial role in development was assigned to. तो Ricardian system ने इस बारे में बात की कि कैसे कैपिटलिस्ट जो हैं वो अपना प्रॉफिट को accumulate कर सकते हैं, right? So he talked about profits, right? So he said that development के पीछे जो reason रहेगा that will be profit. So answer is C. Which one of the following model uses distinct concept of the stages of growth? So different stages of growth are given under the Harrod-Domer model. So we under the Harrod model, so we will say answer is B. Right? Okay, beta. Now come to the next question. The classical theory of economic development is of relevance for less developed countries today because it lays emphasis on need for favorable institution, extension of markets, capital accumulation, all of the above. तो basically अगर हम थोड़ा सा इस पे फोकस करें, देखो as you grow, आपका जो सिस्टम, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट अ डेवलप्ड कंट्री. As you will grow, as you will become underdeveloped to developed, the initial theories that were in place will not hold true for you. क्योंकि जो थ्योरीज लिखी गई थी वो तब लिखी गई थी जब इकोनॉमी बहुत अलग थी, ग्लोबल इकोनॉमी बहुत अलग थी, राइट? सो एज यू ग्रो, द क्लासिकल थ्योरीज दे आर ओनली रेलिवेंट टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज. क्यों? क्योंकि वो जो क्लासिकल थ्योरीज हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो बात करती हैं कि कैसे आप अपनी मार्केट को ग्रो कर सकते हो, कैसे आप कैपिटल को एक्यूमुलेट करने के बाद ग्रोथ लेकर आ सकते हो, कैसे आप अपने फेवर में अपने इंस्टीट्यूशन को रख सकते हो, राइट? सो ऑल ऑफ दिस बेटा, दिस इज बेसिकली ओनली यूजफुल फॉर योर लेस डेवलप्ड नेशंस, राइट? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी all of the above. Okay. Which growth model is inspired the use of capital output ratio? All of us know the answer is Harrod-Domer model. Which of the following model makes the assumption of constant saving income ratio? We know Harrod-Domer model. The Harrod-Domer model is one of the well-known models of growth. Which of the two authors of this model wrote earlier and in which year? So, actually, this model was written by Harrod. ठीक है, एंड देन डोमर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट. तो लिखा पहले हैरड ने था और फिर डोमर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया. सो द करेक्ट आंसर विल बी हैरड इन 1939. द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, नैरोअर देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया विल हैपन नेसेसरली इफ देयर इज, बेटा डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वेस्टमेंट हो, यानी कैपिटल फॉर्मेशन हो. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी कैपिटल फॉर्मेशन. कभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आने वाली. एंड द मोमेंट यू निगेट ए,
यू आर लेफ्ट अप विद बी एंड सी. सी कहता है टेक्निकल प्रोग्रेस इन ग्लोबल इकोनॉमी. अगर ग्लोबली टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, हाउ विल दैट इम्पैक्ट इंडिया? Not necessary, na? So C is also incorrect. So answer will be B. Which of the following is inconsistent with Adam Smith theory of development? So Adam Smith basically went ahead and said that the development can only take place up to one level. एक level तक development होगी and then it will fall, right? So there is a limit to development, to growth. ऐसा नहीं है कि growth will be unlimited. There will be a limit to growth, right? So this is incorrect. This is inconsistent, that there is no limit to growth. Huh? Karl Marx ideas about development theory are available in. So Karl Marx actually went ahead and Marx wrote different books. हाँ बच्चे. Now, if you go ahead and you Google a bit, you will find that Das Kapital basically is a book which is written by Karl Marx. And, he went ahead and he talks about why and how capitalism will fail. मतलब कैसे capitalism grow करेगा और कैसे capitalism गिर जाएगा. How capitalism will increase and how capitalism will fall. तो इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने बात की थी. Now, if you look into the name, if you look into the name of this book, या if you just Google Das Capital, तो इसका जो actual name है, it is this entire thing. It is Das Capital, a critic of political economy. ये पूरा इस बुक का नाम है. This is an excellent book and this talks about how capitalism will increase and how capitalism will fall. और इसमें उन्होंने बहुत चीजों की बात की. I hope you know all of this. Organic composition of capital की बात की है और उन्होंने बात की है कि कैसे capitalist with time अपना सारा पैसा जो है वो capital में लगाएंगे पर उसकी वजह से ही उनका नुकसान होगा. So all that he has talked about in this book. So actually speaking, the answer is C, but this is also not the correct name. This is the correct name. Das Capital, a critic of political economy. पूरा ही book का नाम है. Okay, come to the next question. In Schumpeter तो हमेशा entrepreneur की बात करते हैं. So answer is D. कुछ चीजें आपके दिमाग में clear होनी चाहिए. The moment you see the word Schumpeter, you should know कि मेरे को entrepreneur click करना है. It is an entrepreneur theory. Which sector was established most by Ricardo in the context of economic growth? So Ricardo talked about agriculture being the most established sector. Which of the following, according to Ricardo, would form a bottleneck to economic growth? तो Ricardo की theory अगर आप पढ़ो, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चे? हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक लैंड होगा और ये लैंड धीरे धीरे शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी इस लैंड की as compared to the food requirement. पढ़ा था हमने ये सारा. और फिर हमने पूरी बात की थी कि कैसे आपको वो वाला लैंड भी यूज करना पड़ेगा जो अनप्रोडक्टिव लैंड होगा. So we have talked about all this in our lectures. So based on this, the answer to this will be A. Which of the following is inconsistent with Schumpeter's theory of development? बेटा चाहे Schumpeter हो चाहे Adam Smith हो, all of them assumed that there will be a limit to growth. Growth एक limit तक ही हो सकती है. It cannot be forever. So the course of growth is continuous. ये चीज हमेशा inconsistent रहेगी. This will not be true, right? So answer will be A. According to Schumpeter's model, the innovating entrepreneurs get the necessary finance from, so they get it from banks. Which one of the following was given a central place by Schumpeter in his theory? तो innovation को उन्होंने बहुत रोल दिया. दो चीजों को आपको याद रखना है Schumpeter से. Again, we have done this model in class, but it will be innovation and entrepreneurs. इन दोनों का ही बहुत रोल है in Schumpeter's model. Okay.
In which year was the first volume of Das Kapital B. Karl Marx published? So the first volume was published in 1967. इसके ना बहुत volumes आए हैं. So the latest one is volume 3. उसको भी पढ़ो. It is an excellent book written. ठीक है बच्चे. Next question. Myrdal builds his theory of economic development around the idea of. So Myrdal is associated with inequalities. उनका मॉडल inequality पे है. And both regional within nation and outside nation. So both A and C are correct. A and B, both are correct. ठीक है. The concept of vicious cycle of poverty, Nurkse ने दी थी. So answer is Nurkse. Who formulated the theory of circular and cumulative causation, which explains the perpetuation of underdevelopment through growing inequality between developed and underdeveloped country? तो बेटा inequality मैंने अभी आपको बता दी है. He is associated with Myrdal. In the context of which region was big push strategy of development formulated? So when the big push theory or big push strategy came, ideally this big push strategy was built for Eastern Europe. So answer to this question is Eastern Europe. ठीक है बेटा. Come to the next question. Which of the following is a characteristic of underdevelopment? Vicious cycle of poverty. मतलब ये क्या बोलते हैं? देखो अगर पॉवर्टी होगी तो आपके पास फूड शॉर्टेज होगा, आप खाना नहीं खा पाओगे. अगर फूड शॉर्टेज होगा तो आपका लेबर अनप्रोडक्टिव होगा. अगर लेबर अनप्रोडक्टिव होगा तो आउटपुट कम होगा, जीडीपी कम होगा. अगर इनकम कम होगी तो लेबर की वेजेस कम होंगी. वेजेस कम होंगी तो पॉवर्टी बढ़ेगी. सो दिस इज अ विशियस साइकिल दैट कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. Who fixes the poverty line? So I will leave this question because अब we don't have the planning commission anymore. So poverty line यहाँ से नहीं करेंगे. Who formulated the theory of circular and cumulative causation, which explains perpetuation of underdevelopment through growing inequality? Inequality is Myrdal. The basic logic behind big push theory is related to external economies. Yes. So the big push theory basically, bache, it talks about the external economies. I hope you have read big push theory, huh? Under the big push strategy of development, large investments are to be directed towards. तो बिग पुश थ्योरी ये कहता है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सारी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ कर दो. सो आंसर इज इंडस्ट्री. द डिविजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इज लिमिटेड बाय. सो एडम स्मिथ gave role to both the things. He said that whenever you want to divide labor, it will be limited. उसको आप डिवाइड नहीं कर पाओगे because of the limitation of the market and the amount of capital available. So answer will be both A and B. The big push strategy of development was first developed by, all of us know, it is Rost and Rodin. So these were the 50 important DevEco questions.